Imagine आपके पास एक बहुत ही यूनिक पावर है and it's that you can go back in time and then you use that power to go back in time, catch the real killer and then come back. एक बहुत ही टिपिकल सा ट्रूप लग रहा है सुनने में, है ना? At last, टाइम ट्रैवल का कॉन्सेप्ट एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि बहुत बार बहुत ही डिफरेंट एंड समटाइम्स बहुत ही यूनिक वेज में यूज किया गया है. Travel surely is not really new to our ears, but recently I have stumbled upon an anime which you see changed my whole perspective about time travel as a genre. The rules are simple. You can be in the past for only 12 hours, you need to listen to your observer who knows what needs to be done in the past, and lastly, don't change the past. That's it. But in simple powers और rules को कितना skillfully use किया गया है to craft such a story is just mind-blowing. That's why it's maybe regarded as the best anime of the year 2021. ये कहानी आपको कैसे अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेती है with its skillfully crafted storytelling and such a fresh art style is just great. So इसीलिए आज as an otaku लाए हैं आप सबके सामने another review of an anime called Link Click. The synopsis. Tang Zhuoxi and Liu Guang are two best friends with polar identities. I'm pretty sure मैंने दोनों नाम mispronounce किए हैं. But the two have something in common, the power to travel back in time. Liu एक ऐसा बंदा है जो कि somehow एक फोटो को देखकर उस फोटो की फोटोग्राफर की अगली 12 hours और लाइफ को देख सकता है. और शैंग एक्चुअली उन फोटोज के अंदर जा सकता है to live the next 12 hours of the person who took that photo. So technically, they make a great pair. Liu and Shang टाइम फोटो स्टूडियो में काम करते हैं together, जहाँ वो अपने इसी पावर्स का यूज़ करके एक सर्विस प्रोवाइड करते हैं. They can dive in the photos and grant the wishes of the clients. मोटे तौर पर ये कहा जा सकता है कि कोई सीक्रेट जानना है अबाउट योर फ्रेंड या फिर आपको खुद टाइम पे पीछे जाकर अपनी किसी गलती को चेंज करना है तो उस डे की कोई भी फोटो इन दोनों को दे दो एंड दे विल गेट द इंफॉर्मेशन यू नीड और डू द थिंग यू वांट. बाहर वालों को नहीं पता दैट दे कैन गो इनसाइड द फोटो एंड टाइम ट्रैवल, तो जनरली उनको कोई स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन बाहर निकलने का ही काम मिलता है. बट देयर इज अ कैच. देयर आर 3 रूल्स दैट दे मस्ट adhere. First, Liu can see only 12 hours of future to the click of the photo. तो जो भी करना है उन्हीं 12 hours में करना है क्योंकि उसके बाद they had to automatically come back. Secondly, Shang has to listen Liu क्योंकि Liu को पता होता है कि जो फोटोग्राफर में उनकी लाइफ में क्या होने वाला है in those 12 hours and they must act the same while trying to obtain the information. Thirdly, do not change the past. Past को change करना बहुत ही dangerous हो सकता है because just a slight change can lead to some drastic changes in the future. And एक ऐसा बंदा जो कि मरने वाला है उसे वापस नहीं लाया जा सकता. Death is inevitable and the last one is the worst one. The one who is destined to die is just destined to die. तो अपनी यही powers को use करके they try to run their little shop and live a peaceful life. And that's about it. हर एक नए एपिसोड में they get new client who wanna get something done with the photos and they just do it. The complexity in the simple power system. ये सुनने में तो एक बहुत ही सिंपल चीज़ लग रही है, राइट? ये कुछ बहुत ही सिंपल रूल्स हैं और बहुत ही ओरिजिनल लगते हैं. It's like a fresh take on the typical time travel concept. पर इन सिंपल रूल्स को लेकर writer does such a great job कि आपके भी होश उड़ जाएंगे. At each episode जो stories actually उनको use करके सुनाई जाती है, they are just on another level. And it's not just the complexity of the stories you see. एक और चीज़ जो लिंक क्लिक को यूनिक बनाती है कि कैसे उन्होंने टाइम ट्रैवल के कॉन्सेप्ट को यूज़ किया है टू क्रिएट सम ऑफ द मोस्ट इमोशनल स्टोरीज ऑफ ऑल टाइम. आई मीन लिंक क्लिक के पहले कुछ एपिसोड में इन इमोशनल स्टोरीज को यूज़ किया है as a founding base to tell how these things are done and how the characters are growing each time and how they are really happy that the tragic life of these photos they need to live are not theirs and it makes them content with their lives. Link Click is a mystery thriller overall और किस हद तक इस mystery thriller को use किया गया है to get certain emotion scenes out to make the viewers cry is just on another level. उन कैरेक्टर्स की कहानी जो कि हमारे प्रोटैगनिस्ट जीते हैं ताकि वो अपने क्लाइंट की विशेस पूरी कर पाए, दे आर नॉट जनरली नॉर्मल. हर डाय के साथ आता है एक नया एक्सपीरियंस और एक नया व्यू पॉइंट which ultimately strengthens the bond between the two boys. The simple power system is used to create some complex and great storytelling, especially in the first 5 episodes. We are able to see how the two are able to experience loss, grief,
love, hatred and many other emotions जो कि शायद वो अपनी लाइफ में कभी एक्सपीरियंस ना कर पाते, the way they are able to do. It's a learning experience in each episode. They understand human emotions and human psychology much better. They see death, they see life and they see so many things and so many emotions in so many extreme situations where they are thrown into. और वो इतने डिफरेंट सिचुएशंस और इतनी डिफरेंट स्टोरीज को एक्सपीरियंस इसीलिए कर पाते हैं बिकॉज दी स्टोरीज आर नॉट देयर ओन, दे आर लिविंग द लाइव्स ऑफ अदर्स. They are experiencing what others had experienced before through their photos and their memories. और इसीलिए वो इतने wide variety of things को experience कर पाते हैं, even though they are just two fellows in some peaceful shop in some close corners of the city. The characters. जब भी शेंग पास्ट में जाता है और उस कैरेक्टर के लव्ड वंस को मरता हुआ देखता है, he resonates with the character जिसके अंदर वो गया है, and with that वो हेल्प करने की कोशिश करता है, even though he's not supposed to. But Lou is there to get things right every time and make sure कि वो पास्ट को चेंज नहीं कर रहे by doing something wrong जो उनको नहीं करना चाहिए. And they differ in opinions. शेंग एंड लू आर पोलर ऑपोजिट टू ईच अदर. उन दोनों कैरेक्टर्स में ज़मीन आसमान का डिफरेंस है. शेंग इज समवन जो कि बहुत जल्दी अपनी इमोशंस को अपने सामने आने देता है. व्हाट आई मीन बाय दैट कि वो बिलीव करता है हर एक चीज़ को सही कर देना. ही वॉन्ट्स टू डू द राइट थिंग्स. ही वॉन्ट्स टू प्रोटेक्ट द लव्ड वंस ऑफ हिज क्लाइंट्स. ही वॉन्ट्स टू कैच द किलर बाय हिमसेल्फ एंड डू एवरीथिंग राइट. और इसी वजह से वो मोस्ट ऑफ द टाइम लू को इग्नोर करता है, अपने रास्ते चला जाता है, by which he sometimes changes the past a little. और इन्हीं छोटी मिस्टेक्स को बहुत बड़ी बन जाती हैं as a time passes. But Lou on the other hand is completely opposite. वो एक बहुत ही precautionary आदमी है and he makes sure कि कोई भी rules शेंग break नहीं कर रहा. Sometimes जब वो out of character behave करता है तो Lou is sure to get things right again by giving him some wrong instructions and stuff. और यही पर स्टोरी के conflicts arise होते हैं. Sometimes the two just have different opinions, but still they are trying to do the right thing and their own opinions. Shang is naive और उसे ये rules के बारे में नहीं पता. He just wants to do good. Sometimes he won't regret. Lou on the other hand plays by the rule and get things right at the end. And even though कि वो completely erase नहीं कर सकता उन mistakes को, and these mistakes remain mistakes. Mystery thriller. At the later part of the series, the story takes turn for the good. अभी तक तो बस emotions दिखाए जा रहे थे, which really makes you feel good about this anime. But after this, they get into something much more dangerous and dark. This anime takes a 180-degree turn just in a minute. और उसके बाद you don't even know कि कब इतने murders और पुलिस के बीच में story अटक जाती है. And I mean it. Primary episodes build the character and the power system. Now things start to get real serious here. इस बार पुलिस भी इन्वॉल्व है, एक सीरियल किलर भी है. Now it's just the race against the time. It's just a realization. It's when Shang hits hard and it's when उसे पता चलता है कितनी मिस्टेक्स कर दी है over the course of the story. It's like कि जो भी हो रहा है उसी की वजह से हो रहा है. And from that on, it starts to give absolute bangers all throughout the season, especially the last episode. The animation. The catch about this anime is that it's Chinese. और हमने कोई खास चाइनीज़ी एनिमे सीरीज तो देखी नहीं है. It's the first one to make it big in the community. चाइनीज़ी होने की वजह से इसका जो आर्ट स्टाइल है बहुत ही फ्रेश है. Maybe it's because of the fact that it's adapted from a manhwa in China and thus is not really inspired by anime. इसे एनिमे तो कह ही सकते हैं, but ये एनिमे है नहीं. Not just because it's Chinese, but because the art style and color style resembles the Chinese comics more than the anime, even though both are somewhat same. Anyway, इसकी animation बहुत ही fluid है, and if you don't believe me, watch the opening on YouTube. And with such a great art style, to be such a fluid is just some kind of a joke nowadays. ये जो anime है, इसका art style बहुत हद तक Chinese comic से मिलता है. And that's what gave it a more manhwa type of look, which is not something we see every day. Like हर anime का style manga जैसा नहीं हो सकता, but इसका है, and that's what I appreciate about the series animation. Conclusion. So personally, I'm still waiting for the second season to drop soon. अभी तक कोई भी official announcement नहीं है about the second season, except a little 1-minute teaser trailer itself, and we are still waiting.
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो गाइस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी भेज दो। हम ऐसे ही वीडियोस बनाते रहेंगे। Until next time, sayonara.